वेलकम टू अवर वीडियो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स आज हम रिवीजन करने जा रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की। सेक्शन ए के हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करेंगे आज। एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस, ट्रू फॉल्स वगैरह। पेपर में कम से कम 10 नंबर के आ जाते हैं, तो वो भी क्यों जाने, है ना। तो आज हम सेक्शन ए के एक एक नंबर के क्वेश्चंस रिवाइज करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाउ मैनी गर्ल्स वर देयर इन द पोस्ट ग्रेजुएट डिपार्टमेंट ऑफ द टाटा इंस्टीट्यूट बेंगलोर। तो कितनी गर्ल्स थी? सुधा मूर्ति इकल्ली गर्ल थी, ठीक है। देयर वाज ओनली वन गर्ल हु वाज सुधा। आप आंसर पढ़ सकते हो। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, व्हाट डिड सुधा टेल द पैनल बिफोर द इंटरव्यू। ठीक है, आंसर है, शी टोल्ड द पैनल दैट शी होप्ड इट वाज ओनली टेक्निकल इंटरव्यू। उसने ये कहा कि वह सिर्फ ये होप कर रही है कि जो इंटरव्यू है वो एक टेक्निकल इंटरव्यू होएगा। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, हाउ मच मनी डिड सुधा कलेक्ट फ्रॉम एवरीवन हु वांटेड अ साड़ी? 30 रुपीज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वेयर डिड सुधा गो फॉर इंटरव्यू? ठीक है, टेलकोज पिंपरी ऑफिस फॉर द इंटरव्यू, ठीक है। यहाँ पे आप पुणे भी लिख सकते हो कि वो पुणे गई थी ऑफिस इंटरव्यू देने। पुणे में पिंपरी ऑफिस, ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, हु स्टार्टेड द बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया? द ग्रेट टाटास, ठीक है। एमसीक्यू वाले क्वेश्चंस है, वेयर डिड द सुधा सी द एडवर्टाइजमेंट? ऑन नोटिस बोर्ड, इन द न्यूज़पेपर, ऑन टेलीविजन। तो ऑन द नोटिस बोर्ड, फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सेवंथ क्वेश्चन है, सुधा रिसीव्ड अ डैश फ्रॉम फॉर द इंटरव्यू। क्या था? इनलैंड लेटर, पोस्ट कार्ड या टेलीग्राम। तो उसे एक टेलीग्राम मिला था। इस पे क्वेश्चन भी है, ठीक है, एक टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। आगे हमारे पास, व्हाट डज द गुजराती वर्ड आपरो मीन? इसका मतलब होता है अवर। विच फ्लावर्स वर ब्लूमिंग एट द आईआईएससी कैंपस? गुलमोहर्स के। सुधाज, यहाँ पे सुधा की स्पेलिंग गलत है। सुधा स्टूडेंट लाइफ वाज फुल ऑफ हैप्पीनेस, सोरोज या स्ट्रेस, ठीक है। तो इसका आंसर है हैप्पीनेस। सुधा वाज स्टडिंग एट द डैश इन बेंगलोर। कहाँ पढ़ रही थी सुधा? लेडीज हॉस्टल में। इन पुणे सुधा मेट अ डैश यंग मैन, शाई। शाई का मतलब होता है शर्मीला। इन रियल लाइफ डैश एक्सीलेंस इज नॉट इनफ टू बी सक्सेसफुल, academic. Sudha had done better than most of her dash peers in academics. इसका है मेल। क्वेश्चन नंबर 15 देखो, सुधा was feeling very dash remembering her postcard episode, ठीक है, नर्वस। ट्रू फॉल्स है, आफ्टर अ शॉर्ट इंटरव्यू सुधा was told she had been successful। तो इसका क्या है? फॉल्स। आफ्टर अ लॉन्ग इंटरव्यू सुधा was keen on taking up the job। फॉल्स। उससे कोई उसका इंटरेस्ट था नहीं जॉब में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 ध्यान दो, सुधा हैड बीन ऑफर्ड स्कॉलरशिप बाय यूनिवर्सिटीज इन द यूएस, ठीक है, इसका ट्रू। मिस्टर जे.आर.डी. टाटा वाज द चेयरमैन ऑफ द टेल्को कंपनी। फॉल्स। कौन थे? मिस्टर सुमंत मूलगांवकर। द पैनल डिड नॉट आस्क एनी टेक्निकल क्वेश्चन। फॉल्स। सिर्फ टेक्निकल क्वेश्चन ही उसने पूछे थे। अच्छा, ये पीडीएफ बनाई हमारे इन हमारे ये लेक्चरर्स ने, सो अ ग्रेट थैंक टू देम, ठीक है। द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, खुशवंत सिंह ने लिखा है। इसका है पहला क्वेश्चन, हु इज ऑथर ऑफ द चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी? अभी बताया था मैंने, खुशवंत सिंह। सेकंड क्वेश्चन है, हु अकम्पनीड द ऑथर टू द विलेज स्कूल? हिज ग्रैंड मदर। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स। ट्रू या फॉल्स? ट्रू। द ग्रैंड मदर कैरिड डैश चपातीज टू फीड द विलेज डॉग्स। कौन सी? फ्रेश या स्टेल? स्टेल। फॉर हाउ मैनी ईयर्स डिड द ऑथर स्टडी अब्रोड? कितने साल बाहर पढ़ा था ऑथर ने? 5 साल, 5 years। whom डिड द ऑथर्स ग्रैंड मदर फीड इन द सिटी? स्पैरोज को।
The author went to the school on a bicycle in the city. False, motor बस से जाता था वो. The writer was sent to dash in school in the city. An English a private. कौन से स्कूल में भेज रहे थे? और यहाँ पे एक इंग्लिश स्कूल में. An English school. The portrait of author's dash hung above the mantelpiece. Grandfather है, grandmother. Grandfather की grandmother तो भी alive थे, जिंदा थे. What did they have for the breakfast? Breakfast के लिए उनके पास क्या होता था? Sandwich, fruits, stale chapatis या milk. उनके पास क्या होती थी? Stale chapatis. Question number 11. The writer gives the portrait of his dash in the chapter The Portrait of a Lady. तो कौन है? His grandfather, his grandmother. ठीक है, आंसर है his grandmother. Was the writer's grandmother sentimental? No, she was not sentimental. The grandmother said her prayers in a dash way. Sing song. Monotonous या continuous? इसका आंसर है monotonous. What did the grandmother read in the temple scriptures, holy books? Who prepared the author for school in the village? His grandmother. The author shared the room with the grandmother in the city. True or false? तो इसका आंसर है ट्रू. इन दोनों को एक ही कमरा मिला था. When did the grandmother feed the sparrows? In the morning, in the afternoon, in the evening या at night? तो कौन सा टाइम था आफ्टरनून में स्पैरोज को वो फीड करते थे, और डॉग्स को आते हुए, मंदिर से लौटते हुए. द ऑथर्स ग्रैंडफादर वाज सेंटिमेंटल लेडी. नहीं, ग्रैंडमदर वाज अ सेंटिमेंटल लेडी. फॉल्स, शी वाज नॉट सेंटिमेंटल. व्हाट वाज ग्रैंडमदर डूइंग व्हेन शी डाइड? स्लीपिंग, प्रेइंग, स्पिनिंग व्हील या फीडिंग? इसका है प्रेइंग. ठीक है, आगे देखो. The author's father threw breadcrumbs to the sparrows after the grandmother's death. False. ऑथर की मदर ने फेंके थे. ठीक है, आगे हमारे पास लिबर्टी एंड द डिसिप्लिन. विलियम स्लिम ने लिखा है. ठीक है, डैश इज कंसिडर्ड एज अ रिस्ट्रेंट ऑन लिबर्टी. क्या? डिसिप्लिन. डिसिप्लिन बिगिंस विद द ऑफिसर्स. अ प्राइवेट सोल्जर सल्यूटेड द ऑथर. Totalitarian discipline is designed to dash the individual. Submerge. The discipline imposed forcibly is nothing but dictatorship. Discipline is unavoidable for a modern man. True. The Britishers are united when it comes to most of things. True. You will keep to the left for enjoyment. False. Discipline is derogatory. False. Discipline enables men to live in a community. True. Who is the writer of the chapter Liberty and Discipline? William Slim. What is discipline? Training of mind and character. Who punished the writer for not returning a salute properly? Colonel. What is the foundation of all freedom? Discipline. Can we have liberty without discipline? No. What is birthright of every person? Liberty, discipline, fraternity. None of the above is liberty. What type of contract is liberty? Social. What does indiscipline lead to? Chores, यानी परेशानियों. What was made? Who was made to march in front of the whole battalion? The author. With whom? Author कौन था? William Slim. With whom does discipline begin? Officers. अगला लेसन हमारे पास अ प्रेसिडेंट स्पीक्स विच इज एपीजे अब्दुल कलाम. ठीक है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जिसके क्या है, हाँ सही समझा तुमने. ऑथर. What according to the President Kalam the invaders captured besides our hand? According to the President Kalam, the invaders not only captured our land but also our minds. What shows that India has always been a peace loving country? ठीक है, we never conquered or invaded anyone. According to the President Kalam, when did India get its first vision? ठीक है, 1857 में. What happened in 1857? India's War of Independence was started. What is India's ranking in terms of GDP in the world? फिफ्थ नंबर पे. फिफ्थ मतलब फिफ्थ, फाइव कंट्रीज में, फाइव नेशंस में, टॉप फाइव नेशंस में. According to President Kalam, what do we lack in spite of all achievements? The president thinks that we lack self confidence to see ourselves as a developed nation.
What, according to President Kalam, was great opportunity of his life? According to President Kalam, working with Dr. Vikram Sarabhai, Professor Satish Dhawan, and Dr. Brahm Prakash was the great opportunity of his life. Opportunity of his life. What, according to President Kalam, we do when we go to some foreign land? According to President Kalam, we exhibit our best manners when we go to some foreign land. Why does one has to come back to the parking area in Singapore? One has to come back to the parking area to punch tickets if one has overstayed in a restaurant or a shopping mall. आ गया, what do we not do on the beaches of New Zealand and Australia? We don't throw an empty coconut shell everywhere other than the garbage pail on the beaches in Australia and New Zealand. What did the famous ex-municipal commissioner of the Bombay point out in an interview? He pointed out that the dogs of affluent people poo everywhere, and later on the same people make much हल्ला बल हुल्ला बालो है, ये क्या लिखे, about the dirty streets and pavements. According to the President Kalam, what do we do after choosing a government? We choose a government and forfeit our responsibilities, expecting that the government would do all for us. According to President Kalam, what is our attitude towards the burning social issues? It is totally negative. We do nothing. According to President Kalam, why do we run to America? We run to America to bask in their glory and praise their system. What is the meaning of filter? To steal. The milkman was carrying 2 dash of milk to the market pails. Only a dash could save one from the deadly jaws of a crocodile. Miracle. All cadets were wearing blue dash shirts. The police cracked on the rioters with a vengeance. The ex-municipal commissioner Dash pointed out that the rich people litter on the roads with droppings of their dogs. Mr. Teenaker. In terms of GDP, we are among top 5 nations. How many visions did Kalam had for India? It's 3 visions. ठीक है? What did Dr. APJ Abdul Kalam ask the girl who came for his autograph? Option up पे पढ़ लियो. He asked her about her goal in life. How much do you pay to drive through Orchard Road between 5 p.m. and 8 p.m.? $5. तो मैंने पहले 4 सैक्शन ਇਹਦੇ ਲੈਸਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ। ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ 4 ਚੈਪਟਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਆਬਜੈਕਟਿਵ ਟਾਈਪ ਕੁਐਸਚਨ। देन वी विल प्रोसीड टू सेक्शन सी। ओके, वीडियो थोड़ी लंबी होगी पर आप पूरी वीडियो देखो, 2-3 बार देख लो, सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। 2x में देख लो कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट भी नहीं लगेंगे आपको, बस देखनी तो है एक बार, दिमाग में अपे चले जाएंगे जब बार बार देखते जाओगे आप। मैं तो कहता हूँ 3-4 बार देख लो। ठीक है, ओके, कीप स्टडिंग, बाय।